So students, yesterday we did one question yesterday. One question I was doing this question for last 2 days, yesterday and day before, and finally I completed this question in the class. However, balance sheet of the question was not matching, so I did that question here again. Started with its working notes, which you already have, and then I made its trading and P&L account. What I want you to match this trading and P&L account with the one what you already have in your register. And wherever changes or corrections are there, do that. So this is trading account where gross profit is 4,81,450, and this is profit and loss account. Profit and loss account is continuing here. Manager's commission is 1,161 and net profit after manager's commission is 4,644. Yesterday it was not the same, maybe because of calculation mistakes which I did, which I might have done in the class. And here we have working notes to calculate manager's commission. And this is balance sheet of the same question as at 31st March 2023. So match your trading account, P&L account and the balance sheet with the one that I have done here. After doing this, after matching and doing the necessary corrections, guys, you need to go through this entire question and its solution thoroughly because it has many adjustments so that you could understand everything. And in case still you have any doubt, you can ask me that in our tomorrow's class. Yes, yes, sir. Do not write anything, guys. Just understand this.
Guys, this information is given to us. This is the extract of trial balance of Rashmi Traders for the accounting year 2022-23, and this is the additional information for for the same accounting year. All this information we have to present in final accounts of Rashmi Traders for the accounting year 22-23. You know how to do this, guys. So there is nothing new in that. The assignment which I gave you yesterday, the first two questions are of same kind, in which you have to present this given information in final accounts. Apart from that, you also have to pass journal entries for the adjustments. Do you remember that, guys? I'm asking, do you remember this? Yes, sir. Yes, sir. If this is the assignment which I gave you guys yesterday in the class. Here we have provision for doubtful debts and provision for discount on debtors in the first question. The A part of this question is that we have to pass journal entries for the additional information which have not been recorded in books yet. This is the other question. Here also we have prepaid, accrued, outstanding and unearned, and here also in the A part we have to pass adjustment entries for additional information not recorded in books yet. Right? You know that usually while preparing final accounts by a sole proprietor or by a small business, they do not pass any entries for adjustments, but they take the effects of the adjustments directly in their final accounts. However, what if they are asked to pass journal entries? That is what I'm explaining you guys through this example. I hope you all have got me. I'm asking guys, have you understood this or not? Yes, sir. Yes. Yes. Now you do one thing, guys. You better note down this question, this example. Please do this fast, all. Note down this also, guys. So I hope, guys, you have noted down this, right? Yes, sir. Add these 2 points also.
I hope guys you are noting down this. Yes, sir. Are you done with this, guys? For 2 minutes. Vaishnavi Soni and Vaishnavi Chaudhary both. I think you have noted down already this one, right? Yes. So I hope you have understood what we are supposed to do in this question, guys. Yes, sir. Yes, sir. We have to pass journal entries for the unrecorded items to prepare a fresh trial balance and thereby final accounts. This is the other way of preparing final accounts, guys. Instead of taking effects of additional information directly in our final accounts, we first pass journal entries, then we post them into ledger, then we prepare fresh trial balance, and then from that trial balance, we make our final accounts. And that new trial balance will have all this information in it. ट्रायल बैलेंस के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन आ जाएंगी जिसके लिए एंट्रीज पास नहीं हुई थी, लेकिन उसके साथ साथ हमें कुछ और एंट्रीज पास करनी पड़ेगी इन 4 पॉइंट्स के अलावा टू कन्वर्ट कैश बेसिस इनटू एक्रूअल बेसिस। वो क्या है वो आपको समझा रहा हूं अभी। तो शुड आई स्टार्ट गाइस? Yes, sir. देखिए यहाँ पे गाइस इस क्वेश्चन में आपको ट्रायल बैलेंस में आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, अर्न, इसके अलावा दो प्रोविजंस दिए हुए हैं। I have already told you in the class that whenever these items are given in trial balance without any specification, we should assume that they are coming from the previous year. It means outstanding, prepaid, accrued, unearned provisions, they actually were made at the end of the previous year, that is on 31st March 2022. मतलब ये जो आउटस्टैंडिंग वेजेस है 1400 का, ये पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है। एंड द सेम इज विद दीज आइटम्स, राइट? हमें इनके लिए पहले जर्नल एंट्रीज पास करनी पड़ेंगी। अकाउंटेंट ने क्या किया, जब पिछले साल का 1400 का वेजेस इस बार पे किया, वो तो कैश बेसिस फॉलो कर रहा था ड्यूरिंग द एंटायर ईयर 22-23। तो जब उसने 1400 का वेजेस पे किया, दैट टाइम ही डेबिटेड वेजेस अकाउंट एंड क्रेडिटेड कैश और बैंक अकाउंट। इट मींस दिस 1400 इज इंक्लूडेड इन दिस 12600। इसीलिए फाइनल अकाउंट्स बनाते समय हमें आउटस्टैंडिंग वेजेस 1400 को इस वेजेस में से लेस करते हैं, क्योंकि ये 1400 इस साल का नहीं है, पिछले साल का है। करेक्ट और नॉट?
Yes, sir. आई एम आस्किंग ऑल गाइस, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग। Yes. लेकिन अगर Yes, हमें sir. जर्नल एंट्रीज पास करनी है, जैसा कि हमें इस क्वेश्चन में पूछा है, तो फिर हम क्या करेंगे? यहाँ पे अकाउंटेंट को इस वेजेस को पे करते समय डेबिट करना चाहिए था वेजेस को, सॉरी डेबिट करना चाहिए था आउटस्टैंडिंग वेजेस को, क्रेडिट करना चाहिए था कैश या बैंक को, बट व्हाट ही डिड, ही डेबिटेड वेजेस अकाउंट instead of debiting outstanding wages. So now your first entry would be outstanding wages account debit to wages account with the amount of outstanding wages of the previous year, that is 1400. This would be our first journal entry. इससे हमने क्या किया, अपने करंट ईयर के वेजेस को कम कर दिया और लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग भी हमारी बुक से चला गया क्योंकि हमने इसको डेबिट कर दिया जिसका क्रेडिट बैलेंस था हमारी बुक्स में। ये आया आप सबको समझ में गाइस या नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. प्रीपेड वेजेस 500 का है, मतलब पिछले साल के एंड में प्रीपेड था 500, मतलब पिछले साल हमने 500 का वेजेस पे कर दिया था और वो पिछले साल का नहीं था, आने वाले साल मतलब इस साल अकाउंटिंग ईयर 22-23 का था, राइट? तो इस साल अकाउंटेंट को क्या एंट्री पास करनी चाहिए, उसको वेजेस अकाउंट को डेबिट करना चाहिए और प्रीपेड वेजेस को क्रेडिट करना चाहिए ताकि प्रीपेड बुक्स में से चला जाए और जो ये जो वेजेस है 500 इस साल का, लेकिन जिसको पिछले साल पे कर दिया था, वो वेजेस अकाउंट में इंक्लूड हो जाए। और उसने साल भर में ये एंट्री पास नहीं की, अब हम इस एंट्री को पास करेंगे, दैट इज wages account debit to prepaid wages account with 500. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. तो ये हमने दो एंट्रीज कर दी अभी इन दोनों आइटम्स के लिए जो हमें ट्रायल बैलेंस में दिए हुए हैं। एक्रूड रेंट पिछले साल का एक्रूड था, मतलब पिछले साल के एंड में एक्रूड था, मतलब पिछले साल मिल जाना चाहिए था पर नहीं मिला था। इस साल के एंड तक तो मिल गया होगा, लेकिन जब वो मिला तो अकाउंटेंट ने कैश और बैंक अकाउंट को डेबिट किया और रेंट अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। दिस इज हाउ rent of 700 was included in 5400, but that rent was not of this year but was of the previous year. अकाउंटेंट को क्या करना चाहिए था, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्रूड रेंट अकाउंट, पर उसने क्या किया, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। तो अब हम रेंट अकाउंट जिसको उसने क्रिएट किया था उसको हम डेबिट कर देंगे, मतलब रेंट को कम कर देंगे और एक्रूड रेंट को क्रिएट कर देंगे। So the third entry would be rent account debit to accrued rent account with rupees 700. ये सब हम पिछले साल के एडजस्टमेंट्स ही कर रहे हैं अभी अभी हम इस साल के एडजस्टमेंट्स पे आए ही नहीं है गाइस। हैव यू गॉट दिस और नॉट? आपको ये तीनों एंट्री समझ में आई गाइस? फटाफट बोलिए, टाइम नहीं है आपके पास भी और Yes, मेरे sir. पास भी। Yes, sir. राइट, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा मुझसे टेल मी, आई विल एक्सप्लेन यू दैट। नाउ अनअर्न्ड रेंट Sir, अगेन, इट वाज, सॉरी, I didn't get it. व्हिच वन? Accrued rent. ये एक्रूड रेंट कब का है वैष्णवी? पिछले साल का है, क्योंकि इस साल तो अकाउंटिंग करते समय अकाउंटेंट इनमें से किसी भी अकाउंट को यूज करता ही नहीं है क्योंकि वो थ्रू आउट द ईयर कैश बेसिस फॉलो करता है। सो दिस accrued rent is coming from the previous year, राइट? यहां तक समझ में आया? Yes, sir. ओके, मतलब पिछले साल के एंड तक में 700 रुपीज का रेंट मिल जाना चाहिए था पर नहीं मिला, इसलिए अकाउंटेंट ने उसको ईयर एंड में अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स करते समय accrued rent में रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है? Yes.
इस साल जब वो रेंट मिला तो रेंट रिसीव करते समय अकाउंटेंट ने ये माइंड नहीं किया कि वो रेंट इस साल का है, पिछले साल का है या आने वाले साल का। उसने कैश और बैंक अकाउंट को डेबिट किया और रेंट अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। कितने अमाउंट से? जो रेंट पिछले साल का मिल गया 700 उतने से। इसका मतलब 5400 के रेंट में पिछले साल का 700 इंक्लूडेड है। कब का? ये पिछले साल का मिला इस साल में, इसलिए 5400 में इंक्लूडेड है। लेकिन इस साल की इनकम नहीं है ये, तो हमको इस साल के रेंट में से उसको हटाना है। उसके लिए हमने क्या किया? रेंट को कम कर दिया डेबिट करके, और एक्रूड रेंट को अपनी बुक से हटा दिया क्योंकि वो मिल चुका है अब। अब आया आपको समझ में वैष्णवी? Yes, sir. और किसी को डाउट है इसमें? वैष्णवी चौधरी, आद्या और एनीवन? No, sir. No, sir. नेक्स्ट आइटम इज अनअर्न्ड रेंट। ये भी पिछले साल से आ रहा है। कैसे पता पिछले साल से आ रहा है? अगर कोई डेट आपको इसके साथ में नहीं दी है, इसका मतलब ये पिछले साल से आ रहा है गाइस, ये ध्यान रखिएगा। तो अनअर्न्ड रेंट यहाँ पे दिख रहा है 300 का, मतलब पिछले साल के एंड में अनअर्न्ड था, मतलब पिछले साल के एंड तक में हमें एडवांस में 300 रुपए रेंट के रिसीव हो गए थे, पर वो पिछले साल के नहीं थे। तो कब के होंगे? आने वाले साल के, मतलब अकाउंटिंग ईयर 22-23 के, क्योंकि वो पिछले साल ही मिल गए थे इसलिए इस साल नहीं मिलेंगे। तो अकाउंटेंट ने 300 के लिए जो इस साल की इनकम है पर पिछले साल मिल गई थी, उसके लिए करंट ईयर में 22-23 में कोई एंट्री पास नहीं की। जबकि उसको एंट्री पास करनी चाहिए थी। अनअर्न्ड रेंट अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, और रेंट को इंक्रीज करना चाहिए था, क्रेडिट करना चाहिए था 300 से, क्योंकि ये रेंट इस साल का है। अब हम वो एंट्री कर देंगे। इज इट क्लियर और नॉट ऑल? Yes, sir. Yes, sir. ये आप सबको समझ में आया? पिछले साल का जो प्रोविजन होता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, इस साल उसको हम क्या करते हैं गाइस फाइनल अकाउंट्स में? सर हम जो पुराना होता है हम उसको फिर ऐड कर देते हैं उसमें, कि ताकि उसका इफेक्ट खत्म हो जाए। इसमें ऐड कर देते हैं? डेटर डेटर्स में ऐड कर देते हैं और बैड डेट्स में लेस कर देते हैं। मतलब नहीं समझा। प्रीवियस ईयर से जो सर जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमारे पास आ रहा है बुक्स में करंट ईयर में, उसके लिए हम क्या करते हैं? हम्म सर उसके लिए हम बैड डेट्स में से उसको हटा देते हैं क्योंकि वो पिछले साल का है, और डेटर्स में उसको ऐड कर देते हैं। डेटर्स में कब क्यों ऐड करेंगे हम उसको? सर डबल इफेक्ट है ना, तो एक एक जगह बैड डेट्स में लेस कर देते हैं और एक जगह डेटर्स। जो जो चीज नहीं नहीं, जो ट्रायल बैलेंस में जो चीज दिख रही है उसकी डबल इफेक्ट लेते हैं क्या हम? हम डबल इफेक्ट इसका हाँ लेंगे, जो भी हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया है। एनीथिंग विच इज देयर इन ठीक है। ट्रायल बैलेंस, इट मींस फॉर दैट जर्नल एंट्री हैज ऑलरेडी बीन पास्ड, उसका डबल इफेक्ट आपके ट्रायल बैलेंस में ही कहीं होगा, राइट? पिछले साल के प्रोविजन को हम क्या करते हैं? सिर्फ बेड डेट्स में से लेस करते हैं, तो उससे बेड डेट्स हमारा कम हो जाता है। उसके लिए हम एंट्री करते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू बेड डेट्स अकाउंट। पिछले साल वाले के लिए बात कर रहा हूं मैं, वही एंट्री हम यहाँ पे करेंगे। ओके सर। हैव यू अंडरस्टूड दिस अदर्स? यस सर। मैं बाकियों से Yes, पूछ sir. रहा हूँ। Yes, sir. Yes, sir. 1 सेकेंड गाइस, हाँ।
ये जो आज मैंने क्वेश्चन आप लोगों को आपके साथ शेयर किया है, इस क्वेश्चन में गाइस यहाँ पे हमें ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दिया था 6,000 रुपीज का। इसका हमने क्या किया है, सिर्फ बेड डेट्स में से लेस किया है इसको पी एंड एल में। ये कर दिया यहाँ पे लेस बेड डेट्स में से। इस 6,000 को हम बैलेंस शीट में डेटर्स में से लेस नहीं किया है। बैलेंस शीट में से डेटर्स में से हम करंट ईयर के प्रोविजन को लेस करते हैं, प्रीवियस ईयर वाले को नहीं करते। हाँ सर, समझ में ठीक आया है। आप सबको गाइस या नहीं आया? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. सो प्रीवियस ईयर का जो प्रोविजन है उसको हम बेड डेट्स में से लेस करते हैं, उससे बेड डेट्स हमारा बैलेंस कम हो जाएगा। वही हम यहाँ पे कर रहे हैं, बेड डेट्स को क्रिएट करके और पिछले साल के प्रोविजन को डेबिट कर दिया। तो इसलिए इस तरीके से पिछले साल का प्रोविजन भी हमारी बुक से चला गया और बेड डेट्स भी 4,500 से कम हो गए। द सेम वी डू फॉर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। पिछले साल के प्रोविजन को हम यहाँ डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को with the amount of provision, and that was 1,000 rupees. Have you understood this or not, guys? यस सर। Yes, sir. तो इस तरह से गैस हमने पिछले साल के जितने भी आइटम्स थे जो पिछले साल से आ रहे थे, ये चारों और ये दोनों, इनकी हमने जर्नल एंट्रीज पास कर दी हैं। राइट, अब हम इन एडजस्टमेंट्स के लिए एंट्रीज पास करेंगे, जो कि बहुत इजी है। आपको पता है क्या करना है। रेंट अर्न बट नॉट रिसीव टिल 31st मार्च वाज 900, मींस इट वाज एक्रूड रेंट। इस साल का रेंट था पर मिला नहीं इसलिए 5,400 में इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि अकाउंटेंट कैश बेसिस फॉलो कर रहा है। अब ईयर एंड पे जाके वो इसको एडजस्ट करेगा। एंट्री क्या पास करेगा इसके लिए? एक्रूड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। राइट, एक्रूड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट विद ₹900। और जो रेंट उसको एडवांस में रिसीव हो गया है 350, उसके लिए क्या एंट्री पास करेगा वो? जब ये एडवांस में रेंट रिसीव हुआ तो उस समय उसने कैश अकाउंट को डेबिट किया और रेंट को क्रिएट कर दिया। He did not mind whether this rent is of the current year or of any of the subsequent years. So now what will he do? रेंट अकाउंट डेबिट टू अनअर्न रेंट अकाउंट। Right, he will debit rent account and will credit unearned rent account with rupees 350. Right, guys? Just 1 second, guys. I have to plug in my laptop. So we have passed the two entries for the first accounting adjustment given to us in additional information, guys. Now wages unpaid were 600 and wages paid in advance were 1,200. 31st मार्च 2023 तक आउटस्टैंडिंग वेजेस था 600 का और वेजेस एडवांस में जो पे किया था वो था 1,200। जो आउटस्टैंडिंग वेजेस था उसके लिए हम एंट्री करेंगे वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट, और जो हमने एडवांस में पे किया उसके लिए क्या एंट्री पास करेंगे? प्रीपेड वेजेस अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट, क्योंकि जब उसने एडवांस में पे किया तो पे करते समय उसने वेजेस अकाउंट को डेबिट किया और कैश और बैंक को क्रेडिट कर दिया।
अब हम वेजेस को कम कर रहे हैं क्योंकि जो 1200 का वेजेस पे किया था वो इस साल का नहीं है, फ्यूचर का है, मतलब सब्सिक्वेंट ईयर्स का है। ये समझ में आया आप सबको गैस या नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So we have taken care of these 2 points fully, guys. Now bet debts occurred after the preparation of trial balance 1900. What should we do for this? Sir, bad debts account debit to debtors account. Very right. Bet debts account debit to debtors account with 1900. And then we have to make provision for discount on debtors at the rate of 2% and provision for doubtful debts at the rate of 10%. Correct? पहले हम कौन Yes, सा sir. पहले हम कौन सा प्रोविजन बनाते हैं, फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स या फॉर डाउटफुल डेट्स? For doubtful debts. Right. Debtors given to us in trial balance are 48,000. However, bad debts occurred after the preparation of trial balance are 1900. So net debtors now in our books are 48 minus 1900, that is 46,100. 10% of 46,100 would be 4,610, with which we will make our provision. And the entry for provision is bad debts account debit to provision for doubtful debts account. I hope you have got this, guys. Yes or no? Yes. I'm asking all Vaishnavi, Yes, both sir. Vaishnavi, Anugya, Adya, Yes. Yes, sir. and at last we have to pass the entry for making provision for discount on debtors at the rate of 2%. This provision is made after considering provision for doubtful debts, right? Debtors हमारे 48,000 के थे, उसमें फर्दर बेड डेट्स हुआ है हमारा 1900 का। सो नेट डेटर्स हमारे बुक्स में जो है वो हैं 46,100। इसमें हमने बनाया प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स एट द रेट ऑफ 10%, दैट इज 4,610। So now net amount that we are expecting to have recovered from our debtors would be 46,100 minus 4,610, that is 41,490. On this amount we will make provision for discount on debtors. So the 2% provision we will make on 41,490. Am I clear or not? Yes. Yes, sir. That is 828.29.8. This is the amount of provision, and for that we will pass the entry discount allowed account debit to provision for discount on debtors account with 829.80. Am I clear all, guys? Yes, Yes, sir. sir. Yes, इस sir. तरह से गाइस हमने सारी जो एंट्रीज पास कर ली हैं अपने एडजस्टमेंट के लिए भी और कैश बेसिस को एक्रूअल बेसिस में कन्वर्ट करने के लिए भी। ये एंट्रीज पास करने के बाद अकाउंटेंट इनकी पोस्टिंग करेगा, फिर फ्रेश ट्रायल बैलेंस बनाएगा। और जो फ्रेश ट्रायल बैलेंस होगा वो कुछ ऐसा होगा।
रेंट हमें पहले दिया था 5400 का, लेकिन हमने रेंट को कम कर दिया है 700 से, और रेंट को बढ़ा दिया है 300 से। अल्टीमेटली रेंट को हमने 400 रुपीज से कम कर दिया है, तो यहाँ पे हमारा रेंट जो अब दिखेगा वो दिखेगा 5000। वेजेस हमारी बुक्स में था पहले 12,600, और ये इसके साथ साथ ये प्रीपेड और सॉरी एक्रूड और अनअर्न्ड रेंट जो प्रीवियस ईयर से आ रहे थे वो इस साल बुक्स में से हट जाएंगे। अब हम वेजेस की बात करते हैं। वेजेस को हमने कम किया है 1400 से, और फिर बढ़ाया है 500 से। अल्टीमेटली हमने वेजेस को 900 रुपीज से कम किया है इन दो एंट्रीज की वजह से। सो वेजेस हम 900 रुपीज से कम कर देंगे यहाँ पे। इट वुड बी नाउ 11,700, और ये प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग वेजेस बुक्स में से चला जाएगा। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ गाइस? यस Yes, सर। sir. तो ये चार एंट्रीज को मैंने उसका इफेक्ट ट्रायल बैलेंस में ले लिया है, वैसा ही जैसा कि पोस्टिंग करने के बाद होता। पिछले साल के प्रोविजन को हमने कम कर दिया और बेड डेट्स को भी कम कर दिया है 4500 से, राइट? बेड डेट्स जो हमें यस दिया सर। हुआ था ट्रायल बैलेंस में वो था 3500। अगर मैं बेड डेट्स को 4500 से कम करूंगा तो नेगेटिव में आ जाएगा, इसलिए मैं इसके साथ एक और एंट्री का इफेक्ट ले रहा हूँ। ये चार एंट्रीज का इफेक्ट हम ले चुके हैं, इसलिए मैं इसको येलो में मार्क कर रहा हूँ। बेड डेट्स को हम कम कर रहे हैं 4500 से, और फिर बेड डेट्स को हम इंक्रीज कर रहे हैं 1900 से, और फिर 4610 से। सो हम कितने अमाउंट से बेड डेट्स को इंक्रीज कर रहे हैं? 65 से 6510 से, और कम कर रहे हैं 4500 से। अल्टीमेटली 2010 रुपीज से हम बेड डेट्स को इंक्रीज कर रहे हैं। अब जो है बेड डेट्स दिखेगा वो 2010 से इंक्रीज होके 5510 का हो जाएगा, और ये प्रोविजंस बुक से चले जाएंगे। तो दिस इज हाउ आई हैव टेकन केयर ऑफ। डेटर्स भी हमारी बुक से 1900 से कम हो जाएंगे गाइस, ये जो किया हमने 1900 से कम। So debtors now would be in our books would be of 46,100. Am I clear, guys? All are you understanding this? Yes, sir. यस Dis- सर। Yes, sir. डिस्काउंट अलाउड 1000 रुपीज से कम हो रहा है, और फिर यहाँ पे 829 से इंक्रीज हो रहा है 829.8 से। हमारे पास डिस्काउंट अलाउड 750 था, 829.8 से हमने बढ़ाया और 1000 से कम कर दिया, मतलब नेट अब जो डिस्काउंट बुक्स में हमारे दिख रहा है वो 579.8 का बैलेंस दिख रहा है, वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। अब ये जो एक्रूड रेंट है गाइस ये इस साल का है। पहले वाला एक्रूड रेंट को हम ऑलरेडी एकोमोडेट कर चुके हैं अपने ट्रायल बैलेंस में। एक्रूड रेंट इंक्रीज हो गया है, डेबिट बैलेंस आ रहा है 900 से, और जो रेंट था वो हमारा इंक्रीज हो गया है 900 से। तो रेंट को 900 से मैं इंक्रीज कर रहा हूँ वापस, 5900 हो गया, और हमारे बुक्स में एक्रूड रेंट आ गया 900 डेबिट बैलेंस। ये एक्रूड रेंट कब का है इस पिछले साल का या इस साल का? इस साल का। राइट, ये इस साल का एक्रूड रेंट है। यहाँ रेंट कम हो रहा है 350 से,
और अनअर्न्ड रेंट का क्रेडिट बैलेंस बढ़ रहा है 350 से। सो रेंट को 350 से मैं कम कर रहा हूं, तो अब यहां पे हो जाएगा ये 5550, और यहाँ पे अनअर्न्ड रेंट आ जाएगा, क्रेडिट बैलेंस इसका 350 से, जो इस साल का अनअर्न्ड रेंट है। वेजेस इंक्रीज हो रही है 600 से, और आउटस्टैंडिंग वेजेस भी हमारा क्रेडिट बैलेंस आ रहा है 600 से, जो इस साल का है। सो वेजेस को 600 से इंक्रीज करके 12,300 का हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग वेजेस हमारा 600 से बढ़ जाएगा। वेजेस कम हो रहा है 1200 रुपीज से, क्योंकि जो हमने वेजेस में इंक्लूड किया है वो सब्सिक्वेंट ईयर्स का है, और प्रीपेड वेजेस का 1200 का बैलेंस डेबिट हो रहा है। सो वेजेस में से 1200 रुपीज में कम कर रहा हूँ गाइस वापस, सो इट वुड बी 11,100। और प्रीपेड वेजेस यहाँ पे 1200 से आ गया। बेड डेट्स डेटर्स, इसके बारे में हम पहले ही कर चुके हैं एडजस्टमेंट गाइस। ये वाला बेड डेट्स का भी हम कर चुके हैं, और इस डिस्काउंट अलाउड को भी हम एडजस्ट कर चुके हैं। बचा है सिर्फ प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट, जो सिर्फ इस साल का है 4610, क्योंकि पिछले साल का तो हमारी बुक्स में से खत्म हो चुका है, इसको डेबिट करके। So now the new provision that only will reflect in our trial balance is 4,610, and provision for discount on debtors will reflect with 829.8. This is how guys there would be a fresh trial balance, and now we will have no additional information or adjustment at all. Why? Because all the adjustments have already been accommodated here. ये समझ में आया आप लोगों को जो मैं समझा रहा हूँ? यस सर। इसमें Yes, से sir. ये दोनों आइटम आपके कहाँ जाएंगे? रेंट जाएगा P&L में, वेजेस जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, डेटर्स जाएगा 46,100 एज इट इज बैलेंस शीट में, उसमें से आप कुछ भी लेस नहीं करेंगे। मैं ये बस लेस करके आपको दिखाना पड़ेगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। एसेट साइड में 46,100 लिखोगे, लेस 4610 लिखोगे आप उसके नीचे, लेस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 829.8 लिखोगे। सर बैड डेट भी लिखेंगे ना? बेड डेट्स P&L में आएगा 5510, नहीं बैलेंस शीट में बेड डेट्स नहीं आएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी आप डेटर्स में से कम कर चुके हो। ये देखिए कम कर दिया हमने डेटर्स को हाँ इस ठीक है सर। हाँ है ना। फिर आपका डिस्काउंट अलाउड यस। एज इट इज आएगा 579.8 से, और ये चारों आइटम आपके बैलेंस शीट में चले जाएंगे। हैव यू अंडरस्टूड? ये आ जाएगा यस P&L सर। के क्रेडिट साइड में, ये आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, ये आ जाएगा आपका बैलेंस शीट में एसेट साइड में, और उसमें से आप लेस करोगे ये दोनों अमाउंट्स प्रेजेंट करने के लिए। ये आपका दोनों आ जाएगा P&L के डेबिट साइड में, और ये दो आइटम आपके आएंगे एसेट साइड में बैलेंस शीट में, और ये दोनों आइटम्स आ जाएंगे लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में। This is how guys all the accounting adjustments are accommodated in trial balance by passing the journal entries as I have explained you today. The first two questions which I gave you in the assignment, of these two questions, the A part I have explained you today, guys, you have to pass only journal entries for those two questions. Means that for the A part of those two questions, you do not need to make a fresh trial balance at all. ये मैंने आपको समझाने के लिए सिर्फ बनाया है, आपको नहीं बनाना उन क्वेश्चंस में। ये समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. यस सर। Everyone, have you understood now what you are supposed to do in the A part of first two questions, guys? Yes, sir. Good. यस सर। So that's it, guys. I have recorded this video. I am posting that video also in your group very soon. अगर आज की क्लास में कहीं कुछ डाउट हो तो आप उस वीडियो को वापस देख लीजिएगा एक बार,
आपको समझ में आ जाएगा, एंड दैट वुड बी हेल्पफुल टू कंप्लीट दैट असाइनमेंट विच यू हैव टू ब्रिंग टुमारो गाइस, राइट? So that's it for today. If सर you कल have, स्कूल आना है? sorry, do you have any questions, guys, now? सर टुमारो स्कूल इज देयर, आना है? I do not know. Means, have you been told that there is off tomorrow? सर सार्थक, फोर्थ सैटरडे छुट्टी रहती है। चलिए मैं बात करता हूँ, अदरवाइज हम फिर मंडे को मिलेंगे, राइट? आई एम नॉट वेरी श्योर वेदर वी हैव ऑफ टुमारो और नॉट.